Okay. So let's start with your fundamental analysis. I'm drawing one circuit on my screen. Is it visible to you? Yes, sir. This is some R, and I'm basically putting one capacitor, right? And one capacitor I put here. Circuit visible? Yes, sir. So I am assuming this is C, and this is also C, and this is my input, Yes, sir. and this is my output, right? Yes, sir. So can you tell me, can you draw its frequency response? Can you draw its H omega versus frequency? Can you draw? Yes, sir, I can draw. First of all, Yeah, sure. I have to make the transfer function, and after then I have to make the magnitude and phase plot. According to that, I will draw that. Okay, can you draw it, please? Show me. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute, sir. Sure. I don't know whether you can use my screen. There are some options you can draw here only if you have some that option. Okay, okay. I think there are some features if I'm not wrong. Yes, sir. Yes, sir. So You can use my screen only. Yes, sir. So I will draw. What transfer function you got? Transfer, sir. Actually, right now I am using the S domain. I convert the C and C into 1/SC, and according to that, I use the voltage division principle across. No, that is perfectly fine. But what exactly transfer function you got like this? Okay. You might have got one transfer function, huh? Sir, I am not completed. Just one. Okay. Go ahead, please. And can you also tell me what are the corner frequency of this circuit? Yes, sir. Okay. Sir, the transfer function that I got is this 1 plus R S E upon 2 plus R S E. This I got the transfer function. Are you sure? I guess denominator term is right. It's 1 plus SRC. I guess it should be like this one. 1 plus SRC and divide by what calculation I had? 2 SRC plus 1. Isn't it like this? Sorry, sir. Yes, sir. 1 plus 2 SRC. Sorry. Yes, sir. Okay. So, tell me what application you can use this circuit for, right? What my purpose was asking you to draw this. I just wanted to know this circuit can serve which purpose. Can you tell me? Will it provide some significant gain at low frequency or not? Sir, when I apply at low frequency, then my value will be like 1. And when I apply high frequency, at that case, its value will be 1/2. So what you can conclude from here?
Sir, with that, I am concluding that with the increase in frequency, my magnitude value of this transfer function get decreased. So it's act like a low pass filter. Okay, fine. So continuing this, you told you are good in MOSFET also, right? Okay. Yes, sir. So there is one circuit on my screen you can see like this. I'm drawing one MOSFET, right? Yes, sir. Like this one. Yes, sir. And this is plus VDD, let us suppose, right? Yes, Okay. sir. And this is Vx, I am assuming, or you can say Vy. And Okay. this current, I am assuming Iy. Clear? Yes, sir. First of all, tell me which mode of operation this circuit or this biasing will give you. And how many mode does MOSFET operate? Sir, this will work in saturation mode because the gate terminal is connected to the drain. In any cases, it will work in the saturation mode. Irrespective, if I make this variable, I don't keep a fixed value even then also. Sir, if, if we look into the equation, which is what the condition of saturation is that VGS No, minus VTN. that is fine. My straightway question is, you told that it will be the saturation. I agree to that point, right? Okay. Yes, sir. My question is, if I vary my Vy from 0 to 3 volts, Okay. so will your statement be again same? And I'm giving you one condition. I am assuming that it is in the on state. Okay. Yes, Because sir. once in the on state, it may have two states, triode region or saturation region. Okay. Yes, sir. Yes, sir. You may say here, na, sir, depend upon Vy value that we just must be greater than threshold voltage or not. Yes or no, right? I'm Yes, giving sir. you assumption that assume it's on. That much value of Vy we are taking. Okay, right? My question Yes, is sir. that fine. My Okay. question is, once it's on, for this variation, will it be always in the saturation or it also depend upon this Vy that it may enter into triode and all? What is your take on this? Sir, 1 minute. I just do calculation. Just 1 minute. There is no point of doing calculation, यार इतना क्या इसमें calculation करना है? Sir, if it will work in saturation in any case. आपको मेरी कैलकुलेशन दिख रही है, वैल्यूज दिख रही है सर्किट की? Yes, sir. अब VDD को मैंने कितना फिक्स कर दिया? 3 वोल्ट फिक्स कर दिया और Yes, थ्रेशोल्ड sir. वोल्टेज मैंने आपको कितना दिया? 0.7 दिया है. Vy Yes, मेरा कहाँ से कहाँ sir. वेरी कर रहा है? 0 से 3 वोल्ट जा रहा है. ठीक है, राइट? ओके. Okay. आपने बोला ये सैचुरेशन में काम करेगा, एग्रीड. ठीक है. अब मेरा Yes, क्वेश्चन sir. आपसे ये है, क्या आप यहाँ पे मुझे ये बता सकते हो what will be the graphical plotation for Vy versus Ix and Gm versus Vy? Sir, IY side, I guess. Iy, you can write it Iy as well. Getting my question? Yes, sir. So these are the parameter given to you. You told this is in the saturation. So my next Yes. question is, can you tell me how this graph will be varying and how this will be varying? Tell me. Okay. Just 1 minute, sir. I'm just. हाँ हाँ, आप मेरा स्क्रीन यूज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू. Okay, sir. Got it? So fine.
Yes, Utkarsh. Yes, sir. One minute. आपको लगता है आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो? अब आप सही कर रहे हो, पहले आपने गलत साइन ऑफ इक्वालिटी लगा दिया था। Yes, sir. देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है, देखो, यू आर डूइंग गुड। ओके, देखो ये वोल्टेज Sir, कितना आएगा? sir, I हाँ understand. May I tell? Sir. Yes, sir. हाँ हाँ Sir, हाँ, please. so y-axis will be the Vy. Great, great, great. Okay, so this is the parabolic kind of equation. If I draw between I and Vy, and the parabolic equation is like this, I guess. Something. Sorry. उत्कर्ष क्या कर रहे हैं यार? मैथमेटिकल ब्लंडर कर रहे हैं? Sorry, क्या होगा I इक्वेशन? देखो, यू कैन सी हियर स्क्रीन, सी हियर ऑन द स्क्रीन। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या होगा इक्वेशन सैचुरेशन में? देखो, सबसे पहला तो ये जो डिफरेंस है, कितना आएगा ये डिफरेंस? बताओ, प्लस माइनस। टेल मी। दिस विल बी 3 माइनस वी वाई, राइट? yes, एग्रीड और sir. नॉट? Yes, sir. So what is condition for saturation? The condition for saturation is your VDS that must be greater than equal to your overdrive voltage. Agreed or not? Yes, sir. Correct. Yes. So you can I directly write 3 minus Vy, it must be greater than 2.3 minus Vy. Agreed or not? Yes, sir. So yeah, it will be always true, na? You take any number, this number is going to be always greater than this, right? Yes or no? Sir, actually, I was focusing on this part. No, I no, no, know no. this. Okay, fine. That is fine. Now, once one is done, it's in the saturation. Now, what will be equation? Tell me. Can I write here? I y is equal to whatever k we have. I'm taking all the value k. Okay, I'm not writing mu and something like that. Okay, fine. Yes, sir. So can 2.3 I write minus it? Vy 2.3 minus minus vx Vy. vy ka square, right? Yes, Now sir. tell me Whole one square. thing. Here you are writing vy is equal to 0. So how your current is going to be 0? Your vy is increasing. Your current will be increasing or decreasing? Tell me. When I increase the value of Vy, then Vy is varying current from will 0 to decrease. 3. Sorry, it will decrease. तो क्या बनेगा ग्राफ? ऐसा ग्राफ नहीं आएगा नीचे के नहीं लिए। नहीं नहीं सर, नीचे सर पैराबोलिक होगा सर, बट मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि बिकॉज वाई स्क्वायर है, तो मैं थोड़ा सा ग्राफ में कंफ्यूज अरे हो यार, गया। वो मैं समझ हाँ, गया, बट ये मैथमेटिक्स लगाओ ना सीधा यहाँ पे। यस सर, y यस सर, यस इंक्रीज सर, कर रहा है तो यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये वाला वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी दिस वैल्यू? ये कोई फिक्स वैल्यू होगा, ये आगे कुछ होगा? बताओ। सर सर 2.3 आर यू 2.3 श्योर? sir, at that point I value will become 0, so it will be 2.3. Why at 2.3 it will become 0? Sir, when I equate Iy, because at that point my ID value is 0, so when I Why? put The question is again, why it's 0? Why are you taking it 0? You're right, id will be 0. Why? Question is why? 1 minute, sir. Yeah, sure, take your time. Sir, first of all, to on that to drive the MOSFET, it should be VGS should be greater than threshold voltage, but this condition is not satisfying. It is less than threshold voltage, so Simple. Yeah, simple. You simply say, na, you are right. yes, Correct. sir. You are 100% right. VGS must be greater than equal to VTH, right? Okay. Yes, yes, sir. What is But VGS? G is here, this one, right? yes, sir. Yes, Which is sir. simply 3 volt. Yes, What sir. is S? S is here. So can I say my conditions are must be 3 minus Vy must be greater than 0.7? Isn't it Yes, the sir. condition? Yes, sir. So Actually, this I'm trying value. to say this thing. Yes, sir. Yeah. Right? Clear? ओके, चलो, एक तो मिस्त्री तुमने सॉल्व कर दिया। अब इस मिस्त्री के बारे में आओ जरा, ये क्या होगा? सर इसमें
सर सिंपल सा है इसमें सर, इक्वेशन लगाएंगे आईडी इक्वल सिंपल टू। तो है, बट बनाओ, ग्राफ बनाओ, सिंपल तो है। ग्राफ बना के बताओ मुझे। आप वन यही, मिनट आप मेरा स्पेस यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसको हटाते कैसे हैं सर? मैं हटा दूं इसको? हाँ हटा दूं? सर, यस सर। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं हटा रहा था ताकि आपको यूज करने के लिए बीच में चीजें रहे। मैं थोड़ा थोड़ा चीजें हटा देता हूँ, बाकी हाँ वैल्यूज सर। रखता हूँ ऐसी चीजों के। यहाँ पे बना दीजिए। मुझे ग्राफ बना के दो आप बस। कैलकुलेशन तो आप अपनी कॉपी पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ग्राफ बना दो बस। ओके सर। होता है क्या ट्रांसकंडक्टेंस, कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसकंडक्टेंस को डिफाइन करो। सर transconductance is the ratio of output, sorry, the ratio of output current upon input voltage. तो The इस केस change में in कैसे the निकालोगे ट्रांसकंडक्टेंस? इस केस में सर मेरा MOSFET का इक्वेशन है kn/2 VGS minus VTN whole square. I will divide it with the VGS. Then di/dt will tell the transconductance, and I ओके, get the निकालो। G गुड गुड value. And गुड। निकालो, क्या बनेगा ग्राफ? once, uh, okay, I got the VGS. The transconductance value is Kn V into whole of VGS minus VTN. So now I will change the VG value to 3 volt and the VS value with Y volt and VT Kn. So Gn equal to this thing. हाँ सर। आप मेरे स्क्रीन पे फाइनल वैल्यू लिखो ट्रांसकंडक्टेंस का, जो फाइनल आपका डेरिवेट करके आया। डेरिवेशन आप अपनी कॉपी पे कर दो, मेरे पास फाइनल वैल्यू लिखो। यस सर, यस सर। ये के है सर। गुड, नाइस तो नाइस नाइस नाइस। इसमें अगर मैं वी वाई की वैल्यू 0 करता हूँ तो मतलब ये सेम इसी टाइप का ग्राफ होगा सर, बट ये स्ट्रेट लाइन होगा। करेक्ट 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 स्लोप इज नेगेटिव। करेक्ट करेक्ट। अच्छा उत्कर्ष, मेरे को ये बताओ, जो हमारा वोल्टेज, जो हमारा मॉसफेट होता है, क्या मैं इसको वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर यूज कर सकता हूँ मैं? वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर। सर वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर का ये क्या होता है, मतलब कंडीशन आप बता सकते हो, मतलब कितने मतलब तरह के वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर का मतलब होता है कि अगर आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर पाओ कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कोई एक वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, अगर आप वो वेरी करो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाए। आपने देखा होगा जैसे रियोस्टेट होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, वेरिएबल रजिस्टर है सारे, राइट? ओके। यस तो सर। क्या वैसा कुछ मैं अंडरस्टैंडिंग और अरेंजमेंट कर सकता हूँ मॉसफेट में, कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस मिले कि यार हाँ, इसका रेजिस्टेंस मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? सर एक तो ये करंट सोर्स, करंट मिरर टाइप का तो होता है सर। अच्छा, एक इसमें काम हम करिए, आप लोग अपनी एक काम करिए, अपनी कॉपी पे आईडी वर्सेस वीडीएस बनाओ। कॉपी पे क्या, यहीं पे बना दो आप। आईडी वर्सेस वीडीएस बनाइए। ये लीजिए। अच्छा मैं समझ गया स्पेस। सर, समझ गया सर, समझ गया मैं। एक बार हटा दीजिए। हाँ आप आईडी वर्सेस वीडीएस बनाइए। सर, ट्रायोड रीजन के लिए या फिर सेचुरेशन के लिए सर? या जब मैं आपको बनाने को बोलूंगा तो आपको एंटायर रेंज के लिए बनाना ना, सारे रीजन दिखाने हैं उसमें। ओके। आप ग्राफ बनाइए, आईडी वर्सेस, इक्वेशन मत लिखो, ग्राफ बनाओ। यस सर। आईडी वर्सेस वी डी एस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस सर। अच्छा, अब इसको डिफरेंट वैल्यू ऑफ वीजीएस के लिए बनाओ। करंट वैल्यू ऑफ वीजीएस ग्राफ। ओके। हाँ जी, हाँ जी। करंट वैल्यू ऑफ वीजीएस। वेट।
बन गया? सर तो एक ही पे बनाओ ना, इसी पे दिखा दो, इसी वेव फॉर्म में दिखा दो, अलग अलग क्यों बना रहे हो? क्या फर्क आएगा बताओ यार? ये जो स्लोप है डिफरेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। जो आपने स्लोप बनाए थे क्या डिफरेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, यस लाइक यस, दिस। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा कुछ और समझ गया था। तो यस यार सर। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्लोप अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यू ऑफ बीजीएस के लिए, तो हाँ हाँ स्लोप हाँ। क्या देगा? करंट अपॉन वोल्टेज, वन अपॉन यस सर। रेजिस्टेंस देगा। तो जो इस यस सर। रीजन में रेजिस्टेंस आएगा उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? बीजीएस कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको? अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा यस कि नहीं सर। आएगा? यस सर। यस सर। यस सर, तो करेक्ट। इतना क्या आई है जस्ट इसमें? फॉरगेट। कोई ना, सर क्या नाम है आपका, उत्कर्ष, इस तरह से प्रिपेयर करो एंड थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचनी पड़ेंगी चीजें। दे विल आस्क यू इन लाइक दिस, ओके? दैट इज व्हाई आई ट्राई टू कीप इट लाइक दिस। तो थोड़ा यस सा सर। ऐसे रिहर्सल करो और प्रैक्टिस करो, सिर्फ पढ़ो मत, चीजों को प्रैक्टिस करो, राइट? ओके, फाइन। यस सर। यस सर। हाँ जी, हाँ जी।